स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट फिजिक्स का जो नवंबर 2020 का एग्ज़ाम है, जो कि 19 नवंबर को हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आज मैं बात करूंगी पार्ट बी के क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी मैं बहुत सारी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर 400 एंड 200 केल्विन्स एंड देयर surface area of A is twice of B, and we have to tell the total power emitted by A to that of B. So we have to calculate the ratio of power emitted by the body A to B. So the answer of this question will be 32. Second question is that fz equal to closed integral contour omega square minus 2 by omega minus z d omega, and here the tau is circular contour of radius 3, and in counterclockwise direction the value of function at z equal to 2 minus iota we have to tell. So the answer of this question will be 8 pi plus 2 pi iota. थर्ड क्वेश्चन इज द आइगन वैल्यू ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, m इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर. So we can solve this question by the equation m minus lambda I equal to 0, and we can get the eigen values. So answer will be a square plus b square plus c square 0 0. The fourth question is an inductor L, capacitor C, resistance R are connected in series to an AC source V equal to V naught sin omega t. If the net current found to depend only on the resistance, then which of the following relations will be correct? So for the this AC source, if L, C and R are connected in series and uh, the current is dependent only on resistance, then the resistance of or the impedance of inductor and capacitor will be equal, and if we solve that equation, then we will found the relation to be omega equal to 1 by root LC. Fifth question is, 3-point charges Q are placed at the corners of an equilateral triangle. Another point charge Q is placed at the centroid of the triangle. The force on each of the point charge Q vanishes. The ratio of Q to Q is. So for this question, answer will be 1 by root 3. Next question is, the Hamiltonian H equal to summation over pi square by 2m plus lambda over 4 xi 4. So n non-penetrating particles and mass m, pi and xi are momentum and position coordinates. So we have to tell the average potential energy of the system. So when we solve this question, then we will get the answer is 3 by 4 kBt. And last question is, y equal to a bar bc plus a bar bc bar plus a b bar c bar plus a b bar c, implemented using only two input NAND gates. The minimum number of gates required. So the minimum number of gates required for this question will be 4. Okay, so now thank you for watching, and also please subscribe the channel.